बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट एन एक्सेलेंट फॉरेन स्कॉलरशिप विच विल बी fully funded. My name is Dr. Muhammad Israr Khan and a Ph.D. graduate from Republic of South Korea. So let's talk in brief about how we can prepare ourselves for a foreign scholarship. सो इस प्रेजेंटेशन का मेन मकसद यही है कि हम कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मींस इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फॉरेन स्कॉलरशिप which we would avail. So this presentation will help you if you are in final years of graduation or in your master studies. इसका मतलब यही है कि मतलब अगर आप फाइनल ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन बीएस में है या मास्टर स्टडीज कर रहे हैं और आप फाइनल सेमेस्टर में है, सो आपको ज़रूरत पड़ेगी एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर योर फर्दर स्टडीज़, सो ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगा कि किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और किस तरह स्कॉलरशिप को फाइंड करते हैं। सो the graduation, if you are studying in the final of graduation, it's obvious that you are trying to get admissions or scholarship abroad for your master studies. And if you are in the final year of your master degree, then obviously you are trying to get foreign scholarship for your PhD studies and research. In addition, this presentation will also help you if you just made up your mind to look for scholarships. अगर आपके जहन में ये ख्याल भी आता है कि मैंने फॉरेन स्कॉलरशिप हासिल करनी है, सो दिस प्रेजेंटेशन इज क्वाइटली एंड विल बी हेल्पफुल एंड द नॉलेज presented in this presentation will also help you to prepare for any kind of scholarship in abroad or indigenous. Will tell you the present prerequisite for most scholarship. So there are some basic steps which you will have to prepare and you will be needed if you are willing to apply for some foreign scholarship. First of all, you should have a smart computerized CNIC which has been given over here, and a passport, any national, and here in case of Pakistani national you should have a passport which should have a validity of 5 years or it can be of 10 years. आपके पास सबसे पहले स्मार्ट कंप्यूटराइज CNIC होनी चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होनी चाहिए जिसकी वैलिडिटी या 5 साल या 10 साल तक होनी चाहिए. And in addition to the CNIC and passport, you should have the scanned copies of all your documents. So in documents, the images should be clear and of good quality and size should be less than 500 KB. सबसे पहले तो आपका एक क्लियर प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए. In addition, आपका domicile certificate which you should have a scanned copies of that, and metric and inter, it may be O or A level. So in addition, the graduation degrees plus transcript इसमें आ जाता है आपके अंडर ग्रेड स्टडीज उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, एंड एडिशन मास्टर एमफिल डिग्री प्लस इट्स रेलेवेंट ट्रांसक्रिप्ट और एनी अदर certificates that you earned through your academic career. In addition to these academic degrees and certificate, and you should have the scanned copies of your publications as well. At least the first page of your international or national publication, you should have the scanned copy of the first page where your authorship has been claimed, and also you will have the recommendation letters. So आपके रिकमेंडेशन लेटर जो आपके प्रोफेसर आपको देते हैं या आप उससे ले लेते हैं प्रोफेसर से या आपके सुपरवाइजर से. For example, in case of BS, if some professor or teacher have supervised you, or at your MS level, if someone supervised you, so you should have, you will have to keep that recommendation letters, and you need to have the scanned copies of
the recommendation letter. So these are some of the documents which you will prepare the scanned copies of it. After that, we need to verify the degrees and transcripts from some of our institutes, like in the first place, in case of the metric and inter-level, you should have verification from the IBCC Inter-Board Committee of Chairmen, while in case of higher studies like graduation, master and MPhil, are if you are applying for some postdocs, so you will add over here the PhD as well. However, if you are willing to apply for PhD, then you will have to verify your documents of your undergrad and master and MPhil from Higher Education Commission, which the head office we have in Islamabad, while there are some sub offices also available in Peshawar, Lahore, Karachi as well as Quetta. And after verification of our degrees and transcript from the Higher Education Commission, we need to have verification from MUFA, which is abbreviated of Ministry of Foreign Affairs, and the head office is present in Islamabad. So these are some of the verification at various places, IBCC, HEC and Ministry of Foreign Affairs. Once we go through it, then we go to the next step. उसके बाद the most important is that आपके पास अपडेटेड और टारगेटेड CV होनी चाहिए. CV एब्रीवेशन है करिकुलम वीटा का. इसमें दो चीजें आती हैं. One, it should be updated, means you should update your CV every time when you earn some certificates or additional degrees, then you should update your CV accordingly. And targeted CV का मतलब ये है कि आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो किसी स्कॉलरशिप के लिए, so your CV should target that specific scholarship, and you can make certain changes according to the scholarship requirements, जो कि सही भी होनी चाहिए. So first of all, you should prepare a CV format. एक फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास CV का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, और उसके बाद आप अपडेट करें इसको अगेंस्ट ईच अपॉर्चुनिटी. जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसके मुताबिक अपनी CV को अपग्रेड करते जाइए, एंड टारगेट इट अगेंस्ट ईच अपॉर्चुनिटी. और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है स्कॉलरशिप्स की, तो आप उसको स्पेसिफिकली टारगेट करें, उसी के मुताबिक अपनी CV को फॉर्मेट करते जाएं. एंड उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंस्ड. So your CV should be organized and sequenced. It means that first of all you have some you should have mentioned about your profile and your personal information, and then you should have your work experiences and educational background, and you should mention about the skills you have through your academic and research careers. And it's important, it's critically important that you should add the reference which you are carrying the reference letter. Means उस प्रोफेसर का, टीचर का, सुपरवाइजर का जो आपने रेफरेंस लेटर रखा हुआ है, जिसका रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं, so you should add that relevant persons or referees in your CV compulsory. ओके, तो उसके बाद स्कॉलरशिप की नौइयत के मुताबिक कभी कभी वो आपसे इंग्लिश स्किल मांगते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स मांगते हैं. सो यू शुड हैव एनफ इंग्लिश proficiency skills. For example, in English English has been one of the important international language through which we communicate. So for that we need to have English proficiency letters. So English proficiency letter represent that how much skills, communication skills you have in English language. For that we have different tests like IELTS, TOEFL. These are organized at various times intervals in our country, and then these are the parameters which will improve your English and are the parameters that indicate how efficient we are in English. So अगर
स्कॉलरशिप की नौयत के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉरेन स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हो and the professor asks you to appear in IELTS or TOEFL, so you should have already the minimum or maximum score in IELTS and TOEFL so that you will be able to apply for any kind of foreign scholarship. लेकिन कोई स्कॉलरशिप में इस तरह होता है कि उसमें आपसे आइट्स या टॉफल नहीं मांगते हैं, सो दैट्स कूल, इट्स ओके, बट most of the cases, in most of the foreign cases, foreign scholarships, they will ask you to show the score, how much score you have in IELTS and TOEFL. IELTS और TOEFL के केस में there if you अगर आप पहले ही से IELTS या TOEFL में पेयर हो जाते हो तो उसकी वैलिडिटी है 2 years. So within 2 years of IELTS score you have earned already, you can apply for any foreign scholarship. Budget, financial budget, the most important part initially. Although you are applying for some financial support as well when you are trying to gain the foreign scholarship. However, you have a spare budget of 80,000 to 9,000 means जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी initially for appearing in IELTS or TOEFL fees, or if you are gonna appear in GRE graduate assessment test or document attestation fees जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है IBC से और हायर एजुकेशन कमीशन से और फॉरेन ऑफिस से, that will charge you some certain amount of fee, and there are other miscellaneous that we need the finance as well. So आपका बजट at least, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 80,000 से 90,000 तक आपका बजट होना चाहिए financially, and this should be, you should have well prepared if you are going to apply for some foreign scholarship. Additionally, अगर आप initially if you are able to get the foreign scholarship, you should have enough budget even to take an airfare. So flight के लिए आपके पास इतनी amount होनी चाहिए so that you can avail the foreign scholarship once you got it. So these are some of the most important thing that you need to get the foreign scholarship is that a guarantor or sponsor. बाज़ फॉरेन स्कॉलरशिप में आपसे वो मांगते हैं कि आपका गारंटर कौन है या आपका स्पॉन्सर कौन है. सो एटलीस्ट आपके पास कोई 19 ग्रेड का या 18 ग्रेड का ऑफिसर्स होना चाहिए जो आपको गारंट कर रहा है या आपको स्पॉन्सर करने की वो उठा लेता है, जिम्मा उठाता है. सो गारंटर या स्पॉन्सर, it should be in some certain cases of foreign scholarship they ask for guarantor or sponsor. लेकिन अगर आप ईस्ट कंट्रीज के लिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर जापान, कोरिया और चाइना लाइक दैट, सो दे विल नॉट आस्क फॉर guarantor or sponsor at your home. They will provide you the fully funded scholarship. They will not ask any guarantor or sponsor at your home. So in this case guarantor or sponsor होना कौन चाहिए? Ideally he or she should be your family members. It might be a family friend or political figure that takes guarantee or willing to sponsor you, and should not be a guarantor of someone else जो कि ऑलरेडी किसी के गारंटर नहीं है. 6 million to 18 millions, these are you should have to show some financial budget, and he should or she should testify for you and keep your relation good with them. Referees or recommendation letters. As I have already mentioned that in your documents you have to attach, or you must have the scanned copies of the recommendation and the reference letter. So this is various formats of recommendation letters you can use.
And who must be the referees? The referees must have two recommendation, means the applicant who is willing to apply for the foreign scholarship, उसके पास दो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए. बाज लोग इसे रेफरेंस लेटर कहते हैं, बाज लोग इसको रिकमेंडेशन लेटर्स कहते हैं. वट एवर रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर एक ही चीज है, जो कि आपके प्रोफेसर हो सकते हैं जिसने आपको पढ़ाया हो या जिसने आपको सुपरवाइजर किया हो ड्यूरिंग योर बीएस, ड्यूरिंग योर एमएस और ड्यूरिंग योर पीएचडी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सम पोस्टडॉक स्कॉलरशिप. सो अ थर्ड रेफरेंस ऑन स्टैंड बाय. सो दो रिकमेंडेशन लेटर तो आपके पास मस्ट होने चाहिए, और थर्ड रेफरी ऑन स्टैंड बाय मीन्स कि आपके पास एक्स्ट्रा इजाफी होना चाहिए, एक लेटर, 3 लेटर एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, और उसमें से दो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक रेलिवेंट हो, और वन वर्क मींस एक जिसके साथ आपने रिसर्च की है, फॉर एग्जांपल जिसने आपको सुपरवाइज किया हुआ है, और दो आपके एकेडमिक रेलेवेंट टीचर्स होने चाहिए जिन्होंने आपको ड्यूरिंग योर प्रीवियस डिग्रीज आपको पढ़ाया हो. प्रोफेसर हो सकता है विथ फॉरेन क्वालिफिकेशन, अगर वो फॉरेन क्वालिफाइड है दैट इज मच बेटर, बिकॉज इट यूजुअली इसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है, एंड should have good at English, because at certain point your referee will be contacted uh, in order to ask about your academic as well as research background, and your referees are the person who is recommending you for your fund scholarship have our university registered email. Like here यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, in case of my ID misr@cus.edu.pk. so the email, the referees or the recommending persons should have a registered email ID, so that the scholarship persons, the people who are providing the foreign scholarship may contact your referees in order to confirm your academic as well as research capabilities. And you study objective or topic of research. आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका स्टडी ऑब्जेक्टिव्स और आपका रिसर्च किस टॉपिक पे है, एंड आप किस रिसर्च में जाना चाहते हैं. सो योर इंटर्नशिप शुड बी इन इट. आप जिस टॉपिक को पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज भी हो, एंड इट आल्सो सीक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट. हॉट टॉपिक्स मीन्स आप की प्रीवियस बैकग्राउंड या रिसर्च के मुताबिक भी अपना नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, या आप किसी हॉट टॉपिक, नए टॉपिक पे काम करना चाहते हो, सो यू कैन सर्च द इंटरनेट फॉर दैट, और you can ask your teachers or master supervisor. आप अपने टीचर के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ भी वो डिस्कस करके आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हो जिसमें आप फॉरेन स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल लेने के बाद आप उस पर काम करोगे. और आपके पास एक से ज्यादा टॉपिक्स होने चाहिए. इसका मतलब ये है कि ये लाजमी नहीं है कि आप अगर किसी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो किसी मखसूस टॉपिक पे, तो जरूरी नहीं है कि वही टॉपिक ही आपको मिले, क्योंकि आप रेंडमली अप्लाई करोगे फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए. सो यू शुड हैव मोर देन वन टॉपिक्स एंड विच यू विल स्टडी और कंडक्ट रिसर्च इन योर फ्यूचर स्टडीज abroad. So you should have more than one topics at the moment. लेकिन the most important thing is that the topic of research you select for your future studies in abroad, it should be within the subject domain. इसका मतलब ये है कि आपके फील्ड के, आपके सब्जेक्ट के डोमेन में हो. ये नहीं कि मतलब एक टॉपिक आपका केमिस्ट्री में है और दूसरा टॉपिक आपका बायोलॉजी में है. It should be very and strictly relevant with your subject, and it should fulfill the criteria of the subject you are having in your previous and in your next study level.
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इफ यू ऑलरेडी हैविंग some research papers or research articles you have published at your BS, then it's easy for you to get foreign scholarship in your master. Similarly, if you are having research papers or articles in your MS, then it will be much easier for you to get a foreign scholarship for your PhD studies. So for that, we need to read research papers and review articles of your field and make it a habit. यूजुअली होना ये चाहिए कि आप अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ें, रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ें अपने फील्ड में और इसको आदत बनाएं। तो उसके बाद आपके मैक्सिमम या जो जितने हो सकते हैं आपके रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, पब्लिश्ड होने चाहिए। और आपके लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एमफिल रिसर्च, और ये जो आपका थीसिस जो आप लिखते हैं, योर थीसिस पेपर, एटलीस्ट वन पेपर आफ्टर ग्रेजुएशन. सो आफ्टर ग्रेजुएशन एटलीस्ट वन पेपर इज रिक्वायर्ड, मीन्स बेहतर है इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग one paper at least after your graduation, and that will help you to get foreign scholarship and you can attract the professor जो कि आपकी एबिलिटी शो कर रहा होगा कि आपका एक रिसर्च पेपर आया है इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन। और 2 to 3 पेपर्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए एमफिल के बाद के that also is the parameter which has been showing that you are capable enough that you published almost 2 to 3 papers or research articles after your MPhil. And peer reviewed journals में होना चाहिए, or means you can also write up some review articles. For that, publishing review articles and research articles, you can ask help from your seniors, from your master supervisor, but minimum requirement ये है कि आपकी undergrad के बाद एक पेपर और 2 से 3 पेपर आपके MPhil के बाद हो, then it is easier for you to get a fund and fully funded scholarships. और आपको पता होना चाहिए about some well reputed scholarships if you are going through selective procedures of scholarships. ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि स्कॉलरशिप के कौन कौन से टाइप्स हैं, बट हियर इन दिस स्लाइड आई वांट टू मेंशन अबाउट दैट यू शुड हैव knowledge about what are you looking for example some reputed scholarships, and what are their deadlines and their requirements, उसकी requirement क्या है, deadline क्या है. For example, I am giving you some examples over here of some reputed scholarships like Fulbright, Commonwealth, DART, Erasmus, etc. Similarly, हमारे Higher Education Commission के scholarships हैं OSSP, CMMS, etc. You can search and Google about their scholarships. These are some of the reputed scholarships. You should have well knowledge about that. And social media is one of the things that you can get maximum information about the scholarships, the foreign funded scholarship or indigenous scholarship. There are certain Facebook groups which has been providing a wonderful platform to share knowledge about the scholarship. Join as many as you can. If you are already willing to go abroad with the fully funded scholarship, so you should join many groups that has been present on Facebook. So you can join as many as you can, and there are some scholarship networks, more than 3,000 members. And here one thing to mention, that avoid bogus groups. For example, there are certain people who will promise you to send you for some funded scholarships, but they are bogus in actual, not all, but some bogus groups. You should avoid that. And you can take help from the LinkedIn, which is a large group in academia as well as research. So this has been one of the sources you can use to get more information about some foreign scholarships. Scholarship search engines, there are so many through which you will search, and you can search about the scholarship.
अब ये डिपेंड करता है कि यू आर लुकिंग फॉर मास्टर स्कॉलरशिप और अगर आप पीएचडी के लिए पीएचडी स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्च इंजन है. इधर यू कैन सर्च डायरेक्टली थ्रू गूगल or by putting some words like PhD scholarship or master scholarship, या आप किसी स्पेसिफाइड सर्च इंजन को सर्च कर सकते हैं लाइक scholarships.com or scholarshipportal.com or petersons.com. So these are some of the common scholarship that you can search engine that you can use for searching the firm and fully funded scholarship. However, you can use the Google directly by putting the master or PhD scholarships and which country you have been interested in. You can put just the keyword, for example, master scholarships in Korea or PhD scholarships in Japan. And you should subscribe the scholarship sites, then you can get email notifications. For example, the scholarship positions, the scholar for DEV, scholar for development, and scholarship for study. So you should subscribe their specific channels on YouTube, then you can surely will get notification about the scholarships. And also there are certain ways you can directly search or search the web by search universities in XY countries, or search each university site, search their faculties, identify research groups and identify their ongoing projects and see whether they are hiring research students, and then make a list and look for vacancies on university website. So this you will, ये कन्वेंशनल मेथड है. इसमें यह होता है कि आप यूनिवर्सिटी सर्च करते हो. फॉर एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज इन चाइना और साउथ कोरिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया. सो आप उसमें किसी खास यूनिवर्सिटी जो वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी हो, तो उस यूनिवर्सिटी पे जाके आप उसके फैकल्टी में जाते हो, अपने फील्ड के, अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट. फॉर एग्जांपल, if you are interested in biology, in some subject of biology, so you will directly go to faculty of biological sciences, then you will find some different research groups, and after that what projects have been going on over there, the ongoing projects जो कि वहां पे हो रहे हैं वो क्या क्या हैं, और फिर आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक वहां पे रिसर्च ग्रुप फाइंड करोगे. और उसके बाद इफ दे हैव प्रोवाइडेड विद सम रिसर्च स्टूडेंट्स हायरिंग, तो आप वो एक लिस्ट बनाओगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन से रिसर्च ग्रुप के साथ स्टूडेंट्स हायर करने की कैपेसिटी है. सो आप एक लिस्ट बनाओगे, देन यू विल कन्वेंशनली सेंड हिम एन ईमेल by attaching your CV and email body that I will mention about in my next video. So this is the whole method of surfing on the web. And एक another method है surfing on the web के कि आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे वैकेंसी सर्च करोगे. एक तो आप प्रोजेक्ट्स में से if they wanna hire some research students, so you will have to ask conventionally by sending him or her an email that whether you will hire me as a PhD or MPhil student for your research or not. In another way is that you will have to look for vacancies on university websites. अगर उन्होंने already कोई vacancies research students के लिए put की हुई हैं, तो you can search over there. If the vacancy is relevant to your subject and your qualification, then you can apply for that. The most important is find a mentor जो कि आपको गाइड कर रहा होगा पर स्कॉलरशिप गेन करने के लिए. सो मेंटर जो आपको एक डायरेक्शन देगा वो आपका सीनियर भी हो सकता है जो आपको स्कॉलरशिप पे गाइड करेगा, आपका टीचर भी हो सकता है या मास्टर सुपरवाइजर हो सकता है,
जो कि आपको एडवाइस करेगा कि किस तरह स्कॉलरशिप को गेन करते हैं। या उसके बाद आप मैक्सिमम कोशिश करोगे बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद देम एंड कंटिन्यू द सर्कल। तो मेंटर को फाइंड करने के लिए आप इन लाइंस पे चलेंगे कि आपके सीनियर से हेल्प लेंगे, आप आपके टीचर से या मास्टर आरबीएस सुपरवाइजर से, एंड यू विल हैव टू कंटिन्यू द सर्कल इन ऑर्डर टू फाइंड सम firm with full funded scholarships. Okay, it's a bit that you will have certain technology. For example, you should have good quality laptop, maybe a good smartphone, and learn MS Office, और आपकी एक ईमेल होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता हो, एंड यू हैव बीन यूजिंग फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूअसली दैट particular single ID to get your farm funded scholarship. Or it's a time taking process and you will have to take your time patiently. Patience is the key, no shortcuts. For example, क्या होता है कि बाद लोग शॉर्टकट लेते हैं in order to get the scholarship, but उसके बहुत भी बुरे नतीजे आते हैं. You don't need to get shortcuts. पेशेंस से काम ले, डेली स्पेयर करें 1 to 2 आवर्स स्कॉलरशिप को सर्च करने में, या जो मैंने प्रोसीजर बताएं किस तरह कन्वेंशनल मेथड से, और जो ऑलरेडी वैकेंसी अनाउंस हुई है ऑन द वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विच यू आर लुकिंग फॉर, तो डेली 1 से 2 घंटा उस पर टाइम स्पेंड करें ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप और ड्यूरिंग योर एमफिल रिसर्च. For example, the last year of each of the graduation, your degree, आप ये रूटीन बनाएं कि 1 से 2 घंटा पेशेंस के साथ आप अपने नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के लिए स्कॉलरशिप ढूंढें. एंड यू शुड बी अपडेटेड, विजिलेंट एंड प्रोएक्टिव. थैंक यू सो मच. यकीन आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, एंड आई होप सो दैट इट विल help you to find scholarship, and good luck with your career.